Hello everyone, welcome back to Chemistry Made Easy with Monica. We are studying chemical properties of metals and non-metals. So I will be explaining reaction with oxygen, reaction with water, and then reaction with acids of both metals and non-metals simultaneously. First, reaction with oxygen of metals. Whenever any metal reacts with oxygen, it forms metal oxide. For example, same old example, 2 Mg plus O2 gives 2 MgO. Now this magnesium burns with a dazzling white light in air and produces lot of heat. This MgO is produced with a dazzling white light and lot of heat is produced. Similarly, if we take aluminium and we burn aluminium or it reacts with oxygen, it forms aluminium oxide, Al2O3. Now, aluminium does not react at room temperature but gives aluminium oxide when burnt in air. So then it forms aluminium oxide, which is a amphoteric oxide. Zinc oxide and aluminium oxide both are amphoteric oxides. Now see, when aluminium is forming a layer of Al2O in air, why do we use aluminium for making utensils? We use it for making utensils. First of all, once the layer of aluminium oxide is formed, the inner layers of metals are not affected. Second thing, it is light in weight. Aluminium is light in weight. And third one is it is a good conductor. So because of these three reasons, even though a layer of aluminium oxide is formed on aluminium utensils, it is still used for making utensils. It is still used for cooking purposes. Now what are amphoteric oxides? Amphoteric oxides are those oxides which react with both acid and base and produce salt and water. एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, बेस के साथ में रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं. सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद एसिड्स और विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. जैसे जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl to give zinc chloride plus water. Similarly, aluminium oxide reacts with HCl to give aluminium chloride and water. Zinc oxide reacts with a base, NaOH, strong base, to form sodium zincate and water. Aluminium oxide also reacts with sodium hydroxide to form sodium aluminate and water. Now this is very important question about amphoteric oxide. So this can come for 3 marks in your exam. Amphoteric oxides, why aluminium is used for making utensils even though it forms a layer of aluminium oxide on it. So these two questions are very likely from this topic. Now if we talk about reaction of sodium and potassium with oxygen, very vigorous reaction, very vigorous reaction. So potassium plus oxygen, 4K, that is potassium plus oxygen gives K2O, and 4Na, sodium plus oxygen gives 2NaOH. Both of them are very vigorous reactions. Now to protect them from this Na2O, it should be Na2O over here. Okay. Now to protect them or to prevent an accidental fire, they are kept immersed in kerosene oil. This thing is kept immersed in kerosene oil. This both sodium and potassium are kept immersed in kerosene oil, क्योंकि जैसे ही इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है और वो आग पकड़ लेती है. If we talk about reaction of iron with oxygen, 3Fe plus O2 gives Fe3O4. This reaction at room temperature, this reaction can take place at room temperature. But Fe or iron on heating strongly gives FeO. If you are taking Fe filings, चूरा जो होता है ना एल्यूमिनियम इसका आयन का, वो चूरा अगर आप लेते हैं, if Fe filings
are burnt, they give sparkle in flame when burnt. Fe filings give sparkle in flame when they are burnt. Now 2Cu plus O2 gives 2CuO. This reaction of copper with oxygen will not take place at room temperature, but after burning, copper will give copper oxide. Zn plus O2 gives 2ZnO. That means over here no reaction at room temperature, but the reaction takes place when you heat it. Fine. If we talk about reaction of non-metals with oxygen, what will happen? Non-metals with oxygen give non-metallic oxides. कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन दे रहे हैं आप कार्बन को, it will form carbon dioxide and heat will be evolved. But if carbon is burnt in insufficient oxygen, then it will form carbon monoxide, 2CO. 2C plus O2 gives 2CO and heat. यहाँ पे अगर आप sufficient amount दे रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अगर इनसफिशिएंट अमाउंट दे रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा. किसका इनसफिशिएंट अमाउंट? ऑक्सीजन का. सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड which catches fire when exposed to air. Similarly, 2H2 plus O2 will give 2H2O, that is water. So these were all 5 or 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reactions of metals and non-metals together with oxygen. If you remember, if you understand these 9 reactions, you will get 1 2-mark question and one along with that one mark question. Now you get 3 mark questions, no? So 1 2 mark and 1 mark from this part. That is total 3 marks from this chemical property of metals and non-metals with oxygen. Now let us talk about chemical properties of metals and non-metals with water. See, metals plus water gives metal hydroxide and hydrogen gas. This can be in single step also, and this can be in 2 steps also. First, metal plus water converts into metal oxide and hydrogen. Then metal oxide plus water converts to metal hydroxide. Same 1 step also and in 2 partial steps also. First reaction, potassium and sodium. Potassium को अगर पानी के साथ react करेंगे, it will form 2KOH. It will form hydroxide. See, metal hydroxide and hydrogen gas. और जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी अलॉन्ग विद लॉट ऑफ हीट, वो इतनी तेज होती है कि वो तुरंत से आग पकड़ लेता है, मेटल आग पकड़ लेती है हाइड्रोजन. सो 2K plus H2O, when it reacts, it forms 2KOH along with the release of hydrogen gas and large amount of heat. Similarly, 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2 and heat. Now this heat along with this hydrogen evolved is highly violent and exothermic. Heat evolved hydrogen immediately catches fire. और ये ठंडे सादे पानी से, नॉर्मल टेम्परेचर में जो वाटर है उसके साथ ही रिएक्शन करके सोडियम और पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोजन और हीट बना देते हैं. Now if you react calcium with cold water, it will give calcium hydroxide plus hydrogen gas plus heat. हाइड्रोजन गैस यहाँ भी इवॉल्व हो रही है, लेकिन जो हीट इवॉल्व हो रही है वो उतनी सफिशिएंट नहीं है कि ये हाइड्रोजन आग पकड़ ले. Heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire. That is why reaction of water with calcium is little less violent than the reaction of sodium or potassium with water. दूसरी चीज क्या होती है, जैसे ही ये रिएक्शन हुआ हाइड्रोजन बनी, तो जो कैल्शियम के बचे हुए पार्टिकल्स हैं
वो इस कैल्शियम के ये हाइड्रोजन के बबल्स के साथ चिपक जाते हैं एंड कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गेट स्टिक टू इट्स सरफेस। जो भी बचा हुआ कैल्शियम है वो फ्लोट होने लग जाता है ऊपर। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स हैं वो उसके साथ चिपक जाते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, इफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल विच टाइप ऑफ वाटर? कोल्ड वाटर. It will give magnesium hydroxide plus hydrogen. This reaction is very slow reaction. You can see again hydrogen is evolved. Again magnesium also floats as it gets attached to hydrogen. So this reaction was at normal temperature. With calcium and magnesium it is with cold water. Now reaction with steam. 2Al plus 3H2O gives Al2O3 plus hydrogen. यहाँ पे कैसा वाटर चाहिए आपको? स्टीम के फॉर्म में, वेरी हॉट. Iron also reacts with steam to form Fe3O4 plus 4H2. Zinc also reacts with steam to get ZnO plus H2. Now, lead, copper, silver, gold, they do not react with water at all. इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि कॉपर का बर्तन तो आप स्टीमर बनाने के लिए लेते हैं, लेकिन स्टील नहीं लेते. स्टील तो मोर ड्यूरेबल मानते हैं ना, क्योंकि वो अलॉय होता है तो उसको ज़्यादा ही ड्यूरेबल मानते हैं, आयरन से भी ज़्यादा ड्यूरेबल मानते हैं. लेकिन आयरन में, स्टील में आयरन तो प्रेजेंट है, तो उसकी जगह पे भी आप कॉपर का बर्तन क्यों लेते हैं स्टीमर बनाने के लिए? स्टील का क्यों नहीं लेते जो कि आयरन का अलॉय है? वो इसलिए क्योंकि कॉपर किसी भी तरह से पानी से रिएक्ट नहीं करता, वाटर से रिएक्ट नहीं करता. लेकिन अगर आप आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक विगरस रिएक्शन होगा जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी. ये क्वेश्चन गिव रीजन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट रिएक्शन विद वाटर ऑफ नॉन मेटल्स, सो नॉन मेटल्स डजंट यूजुअली रिएक्ट विद वाटर, but their oxides react to produce acid. Most common acid rain. SO2 है एटमॉस्फेयर में, H2O के साथ ऐड हुई, रेन वाटर के साथ ऐड हुई, H2SO4 which is as a part of acid rain is formed. So this was all about reaction with water from metals and non-metals. Last one, reaction with acids of metals and non-metals. Most of the metals, they react with dilute acid to produce salt and hydrogen. Magnesium, aluminium, zinc, iron. सबका रिएक्शन HCl के साथ किया, सब में आपको सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस निकली. Mg plus 2HCl, MgCl2 plus H2, Al plus 6HCl, AlCl3 plus 3H2, Zn plus 2HCl, ZnCl2 plus H2, Fe plus 2HCl, FeCl2 plus H2. All these hydrochloride acids are dilute in nature. अब यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है, rate of formation of bubbles is fastest in magnesium and it is most exothermic reaction. Then aluminium, then zinc, then iron. Magnesium is most reactive, lesser than that is aluminium, lesser than that is zinc, and lesser than that is iron. In case of copper reacting with dilute HCl, there is no reaction. That means no bubbles are formed. Now hydrogen gas, जैसे हमने बोला metals react with dilute acid to produce salt and hydrogen. अगर ये HCl की जगह आप HNO3 लेंगे, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी. हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद HNO3. व्हाई? Because HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes hydrogen produced to water and itself gets reduced to NO2 or NO or N2O. हाइड्रोजन जब भी बनती है नाइट्रिक एसिड के साथ तो तुरंत नाइट्रिक एसिड, क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर में चेंज कर देता है.
और अपने आप रिड्यूस हो जाता है N2O में या NO में या NO2 में। लेकिन यहाँ पे दो बहुत बड़े एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? मैग्नीशियम और मैंगनीज। मैग्नीशियम और मैंगनीज अगर नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तब वो हाइड्रोजन बनाते हैं, क्योंकि सॉल्ट बनता है MgNO3 होल ट्वाइस एंड MnNO3 होल ट्वाइस, साथ में H2 गैस इज बीइंग रिलीज। दीज टू आर एक्सेप्शनल केसेस। यहाँ पे एक 2 मार्क क्वेश्चन मिलता है, राइट द इक्वेशन ऑफ द टू मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड इन विच हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो आप ये दोनों एग्जाम्पल्स देंगे। फिर एक चीज़ होती है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? HNO3 और HCl का मिक्सचर है, जिसमें HNO3 1 पार्ट होगा और HCl 3 पार्ट्स होंगे। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग मिक्सचर होता है एक्वारेजिया, इतना स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होता है एक्वारेजिया कि इट कैन डिजॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम एंड इट इज़ हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। बहुत ही कोरोसिव होता है। तो क्या होता है, आपने गोल्ड स्मिथ को कोई चीज़ दी, अपने गोल्ड की सुनार को आपने कोई चीज़ दी और वो चमका के आपको दे देते हैं। कैसे चमक जाती है? वो एक्वारेजिया से रिएक्ट करके चमक जाती है। लेकिन होता क्या है कि उस समय पे आपका गोल्ड का लॉस हो जाता है, बिकॉज दिस एक्वारेजिया रिएक्ट्स विद गोल्ड एंड अ लेयर ऑफ गोल्ड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इट. So that is why you get less amount of gold after it is shined with aquaresia. Sometimes it can dissolve the complete metal also. Now, do not react with dilute acids. Who? Non-metals. Non-metals do not react with dilute acids. क्यों नहीं react करते non-metals? देखिए, because when a substance reacts with acid, it produces electron. कोई भी substance जब acid से react करता है तो वो electrons बनाता है. क्यों? It provides electrons to the H ions produced in the acids. Now, non-metals are themselves acceptor of electrons. So, there is no way they can donate electrons to hydrogen ion of the acid. That is why non-metals do not react with dilute acid. This is very important question. Why non-metals do not react with dilute acids? Because when a substance reacts with acids, it provides electrons to H ions produced by the acids. Now, non-metals, because they are acceptors of electrons, so there is no way they can donate electrons to hydrogen of the acid. Now, with this, I come to the end of chemical properties of metals and non-metals. In my next video, I will be showing you reactions of metals with non-metals, or in simple terms. Okay, students, let us summarize now the reaction of metals with steam. So, if the metal is magnesium, it will react violently with steam. It produces magnesium oxide, which is white color powder, and hydrogen gas is produced. It is a bright white glow produced during the reaction. What is the reaction? Mg plus H2O gives MgO plus H2. Now, if it is zinc, the metal is zinc, then it burns in steam. Zinc oxide, which is yellow when hot, white when cold, and hydrogen gas is produced. Reaction is Zn plus H2O gives ZnO plus H2. Iron reacts slowly with steam. Tri-iron tetroxide and hydrogen is produced. Reaction is easily reversible, so iron needs to be heated constantly for the reaction to take place. 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. With lead, copper and silver, steam does not react. White. Okay. Now reaction with cold water.
Reaction of metals with cold water. First we have taken potassium. It reacts violently, explodes with cold water. Enough heat is produced to ignite the hydrogen produced. Hydrogen gas burns in air. Equation is 2K plus 2H2O gives 2KOH plus H2. If the metal taken is sodium, it also reacts violently. Hydrogen formed may catch fire and explode. 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2. That is the reason why sodium is not stored in water or in open in air. Then calcium reacts readily. Hydrogen gas is formed. Ca plus 2H2O gives CaOH whole twice plus H2. If we talk about magnesium, it reacts very slowly with cold water. A few bubbles of hydrogen gas are produced. Lastly, if we talk about zinc, iron, lead, copper or silver, they will not react with cold water. Now in the year 2019 to 2020 May exam 10th standard, there was a question in which you have to give difference between the metals, that is sodium, magnesium and potassium, in tabular form, like this, in tabular form, when they react with cold water, when they react with steam. So if this question is repeated anytime in future, you can give these two tables. Take care. Goodbye.